Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss the very first cellular organelle, which is endoplasmic reticulum. Previous videos lecture के मंगा cell wall बिया और बसी next चिकम दे cell membrane और बिया the site of cellular organelle cytoplasm चिकम दे आगे discuss को. नो नई वीडियो लेक्चर के बमंगा स्टार्ट को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और पदी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बारे बा एटलीस्ट 3 वीडियोस लेक्चर से कम दिया मंगा रिकॉर्ड को फर्स्ट वन से कम दे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ सेलुलर ऑर्गेनेली मींस मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली कम चिप सेल की मौजूद दा और द कम सेलुलर ऑर्गेनेली जे कम दा फॉर द फर्स्ट टाइम जे कम साइंटिस्ट दा रिपोर्ट करी वा द आ साइंटिस्ट नम दे गार्ना उस ददी चिकम अल्ट्रा स्ट्रक्चर दे ददी स्ट्रक्चर कम बच मंग उस डिस्कस को द स्ट्रक्चर चिकम दे चा डिस्क्राइब करो द टूल पॉइंट चिकम दी इंपॉर्टेंट दी दा रिपोर्ट करे चा वो बिया ददी स्ट्रक्चर चिकम दे चा डिस्क्राइब करे ददी चिकम साइंटिस्ट तो स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करे आगे ये दे बल्कि 3 साइंटिस्ट यो दे पोर्टर बल्दे क्लार्क और द थर्ड वन चिकम दे आगे फ्यूलेंस The 3 scientists teach describe कर ले the ultra structure of endoplasmic reticulum. उस दे ले the num चकम दे the बलियो important point दे ची दे the num endoplasmic reticulum चावर करे. No, the term endoplasmic reticulum was given by Porter. The यो बल्स दगा scientist ची ले the structure describe करे पर दगा team की यो scientist चकम दे आगे Porter. और दगा Porter ची दे आगे दे ले चावर कर ले num यो कर ले वालों ने दे endoplasmic रेटिकुलम उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कम देदा पर कम सेल की मौजूदी नु चुम्र चुम यूकारियोटिक सेल ली पर टूल यूकारियोटिक सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूदी खो फ्यू एक्सेप्शंस शते मतलब सदा सेल शते ची पागे की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंटी लाइक फॉर एग्जांपल जर्मिनल सेल या मिचेवर कम स्पर्म सेल से ले पागे क्यों से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंटी सिमिलरली पर मिचेवर मिमिलियन आरबीसी की मींस अमंग चिकम रेड ब्लड सेल्स दी पर रेड ब्लड सेल की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एब्सेंटी हो सिर्फ द मेमल पर मिचेवर आरबीसी की इंक्लूडिंग ह्यूमन नूर जिसुमरा एनिमल्स दी लाइक एम्फीबियंस शो या रेप्टाइल्स शो बर्ड्स शो नो दागो पर कम ब्लड सेल्स की पागे की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूदी द एब्सेंटी सिर्फ द मेमल पर मिचेवर आरबीसी की प्रोकैरियोटिक सेल से कम दी पागे की द टोटली एब्सेंटी सुमरा चम प्रोकैरियोटिक सेल दी पर प्रोकैरियोटिक सेल की बैक्टीरियल सेल की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टोटली एब्सेंटी उसके रदी स्ट्रक्चर चकम दिया मंगो गुरु दी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट चकम दिया सही नदी पर स्ट्रक्चर की 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दिया मंगो डिस्कस को आयो दी सिस्टर ने द अवलने कंपोनेंट है द सेकंड वन कंपोनेंट चकम दिया दी वेसिकल्स और द थर्ड वन कंपोनेंट चकम दिया दी ट्यूब्यूल्स द 3 कंपोनेंट टी कम चमंग डिस्कस को इन द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस दी स्ट्रक्चर संग जुड़ीगी द मेम्ब्रेन चता सो गोरे दिस मेम्ब्रेन इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन the nuclear membrane na outgrowth shurushi kam che dina da outgrowth shurushi da bulging che shurushi no da bulging che kam da stake like structure jodi kam che da structure ta us bakhari the black one and then a series of red one da kam stake like structure che these structure are called cisternae no cisternae che kam da originate ki da kam zena the most important point che cisternae are originated from the nuclear membrane cisternae are perinuclear. Perinuclear means they are very close to nucleus. ذکر دی origin چې دغه څه نه شي د nuclear membrane نشي. بیا دویم کمپوننت کې د دې سری vesicles. نو vesicles چې کوم دی هغه دلته موجود دي. دا کوم vesicles چې ته وي pericisternal vesicle او دا چې کوم دي ته وي peritubular vesicle. The red one چې کوم دي this one vesicle and this one vesicle. These both are called tubular vesicle or da kam chi di cistern ta da portion da red one or da black one chi da di cistern these cistern ta is di kam vesicles mawjud di these vesicles are called pericisternal vesicle bia the these cistern ne charauz no dalta ki shat tube like structure mawjud di kam chi branch structure de us da branch tube like structure chi this structure is called tubules the structure की तो शुद्ध 3 कंपोनेंट शुद्ध एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर्ने वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स खो वेसिकल्स के भैया सादा ची दो किस्म वेसिकली येवी पेरिसिस्टर्नल वेसिकल लका दा कम वेसिकल ची this one या this one and this one
Pericisternal means they are close to cisternae, while the other vesicles, this red one and this red one vesicles are called peritubular vesicles. Peritubular vesicles they are close to tubules, the tube-like structure. The blue color the tubules, or the red one the cisternae. उस cisternae the blebbing of nuclear membrane. The nuclear membrane the bulge out she, the bulging junction or the structure joshi, the structure are called cisternae. Very important point. But these cisternae bani surrounded mojudi endoplasmic reticulum. The dotted chitas are blue color dotted. These dotted are endoplasmic reticulum. These dotted are called ribosome. The cisternae they are budded with ribosome. Ribosome they are attached the cisternae. Nus ribosome se kala attach ki ribosome but discuss ko agazane granules di the attachment the para hot chemical to glue pakar da chikam da glue di chaga da ribosome rawdio attach ki di cisternae da aw chikala ribosome cisternae da attach ni be mang di taraf endoplasmic reticulum mumyo no چې دا رایبوزوم دي ته اټیچ کیږي دا ول څه په ذریعہ اټیچ کیږي through a protein او هغه پروتین چې کوم دی هغه دوی ribofourin protein. That protein is called ribofourin, the protein through which ribosomes are attached into cisternae are called ribofourin protein. Cisternae is the perinuclear, they are close to nucleus. But important point से कम दे चले दी diameter सुमरा दे ना तो cisternae diameter चाहिए आगे 40 to 50 micrometer. 40 to 50 micrometer they are in diameter. The next one vesicles. उस vesicles से कम दे मातो स्तो विचला से एक पदवा किस्म दी. Either pericisternal vesicle, कम ची pericisternal vesicle दी दी तब ribosome अटैची. और कम ची peritubular vesicle दी दा vesicle दी तब ribosome नहीं अटैच. No, मतलब the tubules چې کوم دي دا د smooth endoplasmic reticulum حصہ او دا کوم cisternae چې دي these are the part of rough endoplasmic reticulum. ځکه دي ته اټیچ دي ribosome ورته اټیچ دي. Vesicles چې کوم دي دا بس present at the site of cisternae as well as tubules. د دواړو سایډ ته موجود دي. خو cisternal vesicle او بیا ورته tubular vesicles. اوس د دې چې کوم سایز یې هغه څومره د دې diameter د دې vesicles 50 to 500 micrometer. Important point this one. 50 to 500 in micrometer. These vesicles are 50 to 500 micrometer in diameter. The next one they are pericisternal. Come to ribosome attach or come to ribosome nahi attach. Agar basi peritubular. The last one tubules. The structure dream component se come de. No the diameter se agar 50 to 100 micrometer. Again this is very much important point. The tubules diameter से कम दिया समरा दे आगे 50 to 100 micrometer. But they are periplasmic means they are close to plasma membrane. The tubules सीधी दा बचते नहीं इसदी because the these की दा nucleus शोर होशे ने लो पर these की मौजूद दे दल तकी cell membrane. This black one is cell membrane. CM is cell membrane. लो कदा tubules मंगो कोरों दा चली close to cell membrane या plasma membrane and these cisternae are close to nuclear membrane, so they are called periplasmic. They are close to these tubules are close to plasma membrane. They are branch او کو ګورو د دې ځګ نه واخلای د دې ځګ پوری په یو پوینټ باندې بم رایبوزوم نه اٹیچ نو چې کله رایبوزوم نه اٹیچ اگر هغه اندوپلازمیک ریټیکولم ته موږ سموث اندوپلازمیک ریټیکولم. سو this is the part of smooth endoplasmic reticulum. په نیکسٹ ویډیو لیکچر کې به ان شاء الله مونږه ډیفرنشیټ کوو په سموث اینڈ رف انډوپلازمیک ریټیکولم کې او بیا په لاست ویډیو لیکچر کې به مونږه ډیسکس کوو د فنکشن اف انډوپلازمیک ریټیکولم ان ډیټیل. اپ ټو ناو د دې کې پوری دا دیسو جنرال سټرکچر او د دې سره سره به جی ار ال سیستم چې هغه مونږه په دې کې ډیسکس کوو. تھینک یو.